तो वेलकम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 6th। Okay, let us start. Our first chapter is knowing our numbers. Okay, first is natural numbers. Natural number जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and it goes up to infinity. These are natural numbers. Next is whole numbers. When we use 0 along with the natural numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and it goes up to infinite numbers. Okay, these are whole numbers. Okay, now next let us see some terms related to numbers. What are digits? Okay, digit, the symbols that we are using for writing in number. जो भी सिंबल्स हम एक नंबर को राइट करने के लिए लिखते हैं, दीज आर नोन एज डिजिट्स. टोटल 10 डिजिट्स हैं हमारे पास. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दीज आर टोटल 10 डिजिट्स. इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हम कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज न्यूमरल. इन डिजिट्स को यूज़ करके जब भी हम एक नंबर फॉर्म करते हैं तो उस नंबर को कहते हैं न्यूमरल. वी कॉल दैट नंबर न्यूमरल. फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर लगा लीजिए 2, 4, 3, 6. ये एक नंबर है. 1, 5, 6, 9, 2, 3, 5. ये एक नंबर है. इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हम एक नंबर फॉर्म करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड न्यूमरल. ओके, नेक्स्ट इज नोटेशन. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर. फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इसको जिस भी मेथड से, फॉर एग्जांपल हम इसको नंबर को रिप्रेजेंट करें 2, 4, 3, 6. ठीक है, जो भी कॉमा वगैरह जो भी हम नंबर में देते हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन इन फिगर्स इज नोन एज नोटेशन. ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर्स ओके इज नोन एज नोटेशन. ओके, नेक्स्ट इज numeration. Next is numeration. Okay, the representation of numbers in words. In notation we are representing a number in figures. Okay, but in numeration we are representing it in words. This is called numeration. Okay, for example if 2, 4, 3, 6 is there, then we will say it is 2436. Okay, the representing this number in words. Okay, words में इसको लिखने के लिए को भी कहते हैं हम numeration. Okay, now there are two types of numeration. Okay, first is Indian system of numeration. Indian system of numeration. Okay, the second is international system of numeration. International system of numeration. Okay, Indian system that we are using in India, international system that is using worldwide, mostly the European countries. Okay, these are the two types of numeration. Okay, we will see one by one. First is Indian system of numeration. Okay, we have divided the numbers into various periods in the Indian system of numeration, and based on those periods we have defined some places. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है कोई भी हमारा, राइट से हम देखते हैं तो उसको राइट इज़ यूनिट डिजिट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज़ टेंस डिजिट, देन नेक्स्ट इज़ हंड्रेड्स डिजिट. ओके,
इट्स ए वंस पीरियड, दिस इज वंस पीरियड, ओके। नेक्स्ट है उसके थाउजेंड्स डिजिट, देन 10,000 डिजिट, ओके, दिस इज आवर थाउजेंड्स पीरियड। उसका नेक्स्ट है लैक्स प्लेसेस, 10 lakhs places, okay, this is our lakhs period. Then crores, 10 crores, this is crores period. Like this, arab, 10 arab, kharab, 10 arab, it goes like this, okay. तो we are representing any number, हम किसी भी नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। उसके एक एक नंबर का एक एक डिजिट एक एक प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, ओके। वन डिजिट विल बी एट वंस प्लेस, देन इफ नंबर इज देयर इट विल बी एट टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crores and so on, okay. Let us see few numbers that we have represented in the Indian system of numeration. हम उसमें कैसे दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 7896, 7896, ओके। जब हम राइट से काउंट करेंगे तो ना इसका जो डिजिट 6 है, दिस इज एट यूनिट्स प्लेस, ओके, वंस प्लेस। 9 है एट टेंस प्लेस, 8 एट हंड्रेड्स प्लेस, 7 एट थाउजेंड्स प्लेस, ओके। नो मोर नंबर्स, सो नो मोर प्लेसेस, ओके, इसलिए किसी प्लेसेस पे नहीं है। लेट अस सी वन मोर नंबर, बिगर नंबर, ओके। हमारे पास नंबर है 12,810, ओके। तो 0 इज एट यूनिट्स प्लेस, वंस प्लेस, ओके। 1 एट टेंस प्लेस, 8 एट हंड्रेड्स प्लेस, 2 एट थाउजेंड्स प्लेस, 1 एट 10,000 प्लेस। Like this we can represent any number in the Indian system of numeration. In figures we can see this, okay. Same way इसी से हम इसको वर्ड्स में भी लिख पाएंगे इसी पैटर्न से, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी वन बिगर नंबर, लुक दिस इज 40,35,798, ओके। हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, लुक फ्रॉम राइट 8 इज एट वंस प्लेस, 9 एट टेंस प्लेस, 7 एट हंड्रेड्स प्लेस, 5 एट थाउजेंड्स प्लेस, ओके, 5,798, okay. 3 at 10,000, so it will become 35,000. Then at lakhs place 0, 10 lakhs place 4, so it becomes 40, okay, 40 lakhs. This become thousands, so it will become 35,000, okay, 798. Like this, this is at 10 crores places 2, crores places 4, so it will become 24 crore, okay. 10 lakhs 1, lakhs 2, it will become 12 lakhs, okay. At 1000, 4 at 10,000 and 0 at 1000, okay, it will become 40,000, okay, and 600, okay. Like this we represent numbers in the Indian system of numeration, okay. Next is expanded form, okay. वी हैव सीन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखा। तो इसमें जो भी हमारे डिजिट्स हैं वो उनके जो प्लेसेस हैं उनको हम सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ इन एक्सपांडेड फॉर्म। लेट अस सी बाय एन एग्जांपल, ओके। 7896, ओके, दिस इज एट वंस प्लेस, ओके। द 9 इज एट टेंस प्लेस, 8 इज एट हंड्रेड्स प्लेस एंड 7 इट एज थाउजेंड्स प्लेस, ओके। तो हाउ वी विल राइट दिस नंबर इन द एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 7 एट 1000 प्लेस, सो 7 इंटू 1000, ओके, प्लस 8 एट 100 प्लेस, सो 8 इंटू 100, 9 एट टेंस प्लेसेस, सो 9 इंटू 10, विल ऐड दिस नंबर्स, ओके, प्लस 6 एट वंस प्लेस, सो 6 इंटू 1, okay. Ones place will be multiplied by 1, tens place will be multiplied by 10, 100 place will always be multiplied by 100, thousands place by 1000, and like this it will be multiplied the bigger numbers, okay, that we have read in the Indian system of numeration. Based on the places in the Indian system of numeration हम इस नंबर को एक्सपांड करते हैं, ओके। सो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 7000 प्लस 800 प्लस 90 plus 6. This is the expanded form of this number, okay. Let us see one more example that we have read, is 40,35,798, जो हमने अभी देखा था अपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वाले चार्ट में, ओके। नाउ लुक, दिस इज वंस प्लेस, this is tens place, this is hundreds place, this is thousand,
5, then this is 10,000 place, then this is lakhs, this is 10 lakhs. Okay, then 4 at 10 lakhs place, so 4 into 10 lakhs. Okay, then plus 0 at lakhs, so 0 into 1 lakhs. Okay, plus 3 10,000 place, so 3 into 10,000, plus 5 at 1000 place, to 5 into 1000, plus 7 at 100 place, so 7 into 100, plus 9 at 10 place, so 9 into 10, plus 8 at 1's place, so 8 into 1. Then number becomes 4 into 10 lakhs, it is there, 6 times 0, 1 2 3 4 5 6, plus 0 multiplied by any number 0, no use. Okay, plus 3 into 10,000, it will become 30,000, plus 5 into 1000, it will become 5000, 7 into 100, it will become 700, 9 into 10, it will become 90, 8 into 1, it will become 8. तो ये नंबर हो जाएगा हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म में 40,35,798. Okay, like this we write any number in the expanded form. Okay, next is reading numbers in the Indian system of enumeration. How we will read the number, हम नंबर को पढ़ेंगे कैसे. Okay, let us see these examples only कि ये नंबर है हमारा. Okay, 6 1s प्लेस पे, 9 10s प्लेस पे, 8 100 प्लेस पे, 7 1000 प्लेस पे. तो जो भी नंबर है जिस भी पीरियड में फॉल कर रहा है हम उसी पीरियड से उसको स्टार्ट करते हैं. ओके, थाउजेंड्स पीरियड हमारा 7 है तो इट विल बिकम 7000. ओके, उसके बाद 100 है, 7000, 800, टेंस प्लेस पे 9 और 6 है. ओके, तो सो 96, 7896. ओके, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं. ओके, थाउजेंड्स प्लेस पे 2 है, 10,000 पे 1 है, तो फुल थाउजेंड्स प्लेस को हम एक बार में रीड करेंगे. दिस विल बिकम 12,000. ओके, 12,000. ओके, 810, 12,810. Like this we will read the numbers. Okay, let us see next. This is 2 at lakhs place. Okay, so 2 lakhs, 2 lakhs, then 35 at thousands period, 2,35,000, 895, 895. Okay, let us go next. This is lakhs. Okay, this is 4 at 10 lakhs place and 0 at, it will become 40 lakhs. Then the other two is 35,000, 35,000. Then once 798, directly full number. Okay, now see, let us, this is crores place, 10 crore, this is crore. Okay, it will become 24 crore. Okay, 12 lakhs, 12 lakhs, 40,000. Okay, 600. Like this we read any number in the Indian system of numeration. Okay, नेक्स्ट इज हाउ वी पुट कॉमा इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. कॉमा देखिए जितने पीरियड्स होते हैं हमारे उसके हिसाब से हम नंबर्स को कॉमा देते हैं. ओके, 3 है हमारा लास्ट, तो हमारा पहला कॉमा आएगा 3 के बाद. ओके, उसके बाद हमारे 2 के पीरियड्स हैं. ओके, तो उसके बाद हम 2 पे कॉमा, यहाँ नहीं है इसलिए कोई कॉमा नहीं, यहाँ कॉमा आ जाएगा, ये नंबर लिखा जाएगा 7,896. ओके, यहाँ देखिए 3 है, 3 के बाद एक कॉमा आएगा, उसके बाद 2 के बाद एक कॉमा आएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं है. उसके बाद देखिए ये 3 पे एक कॉमा आ जाएगा, उसके बाद 35 है, यहाँ पे 2 के बाद एक कॉमा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा, फिर वहाँ कॉमा आएगा, उसके बाद आगे नहीं है इसलिए 2 के बाद कॉमा आ जाएगा. तो 2,35,895. लाइक दिस विल राइट दिस नंबर. दिस 798, 3 के बाद कॉमा, देन 2, देन 2. ओके, लाइक दिस विल पुट कॉमा 40, 35, 798, देन 3, then 2, then 2, then 2. Like this we put commas in the Indian system of numeration. Okay, okay, next is face value and place value. Okay, face value क्या होता है? face value हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारे डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The face value of a number is always the number. 0 का फेस वैल्यू 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 7 का 7 होगा, 9 का 9 होगा. जो भी डिजिट है फेस वैल्यू हमेशा उस नंबर की वही होती है. ओके, ओके, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू. ओके, प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नंबर इन द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ओके, based on
numerals digits place, okay, based on numerals digits place in the system of numeration, ओके कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है एक 6847, ओके। नाउ 7 वंस प्लेस पे है, 7 वंस प्लेस पे है, इसकी फेस वैल्यू 7 है, इसकी प्लेस वैल्यू वंस पे है, इसलिए 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 7 इज इट्स प्लेस वैल्यू, ओके। नाउ 4 टेंस प्लेस पे है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 10 40, दिस इज इट्स प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्लेस, ओके। नाउ 8 है, 8 हंड्रेड्स प्लेस पे है, सो इट्स वैल्यू विल बी 8 इंटू 100, 800, दिस इज प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 6 है, थाउजेंड्स प्लेस पे है, ओके, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1000, 6000, 6000 इज प्लेस वैल्यू, ओके। लेट अस सी सम बिग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 4563296 ओके, कॉमा आफ्टर 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, ओके। नाउ place value, for example place value of 2, look this is ones, tens, 100, 1000, you will see the place value of 2 at thousands place, so 2 into 1000 is equal to 2000, this is place value of 2, face value is always 2, okay, but place value is based on the place, 2 into 1000 is equal to 2000। अब 5 देखते हैं, यहाँ देखिए thousands था, 10,000 है, ये lakhs है, 10 lakhs है, 10 lakhs place 5 is there, so 5 into 10 lakhs, okay, 50 lakhs, this is place value of 5, okay, like this is crores place, so 4 crore is the place value of 4, okay, 4 into crore, okay, 4 crore is the face value, okay। 4 crore, okay, this is place value of 4, like this we find the place value and face value of any number, okay। Simple formula it, place value of any digit is equal to face value into its position value, okay, position value in the system of numeration, okay, this is simple formula, you multiply this, okay। लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स कि किसी भी नंबर में हम कैसे कॉमा पुट करते हैं और हाउ टू राइट द नेम्स, ओके। लेट अस सी सम एग्जांपल्स 279453, okay, this is the number given, okay। In the Indian system of numeration, last 3 digit we put comma, then 2 digit and 2 digit, okay। Look, this is ones place, this is tens, this is 100, this is 1000, this is 10,000, this is lakhs, okay। So how to write the names? This is 2, this is putting comma, 3 digit 2 digit and so on, now 2 at lakhs place, so 2 lakhs, okay। Now look, thousands 79, so 79,000, look 453, like this we put comma and we write the names, okay। Let us see other examples, big example 152700375, okay, last 3 digit will put comma, then 2 digit will put comma, then 2 digit will put comma, okay। This is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crores, 10 crores, okay। So this is 15 crore, 15 crores, this is 27 lakhs, okay, 1000, 10,000, 0, no need, 375,
Like this, we put comma in any number and we write the names of these numbers. Okay, let us see one more example related to place value and face value. Okay, your number is 578493087. Okay, the question is find the difference. Find the difference of the place values of two 8s. Okay, two 8s are in their number. Okay, this number. Okay, one is here, one is here. Okay, now let us find how we will do it. Okay, the number is 578493087. Okay, this is ones place, this is tens, this is 100. 1 8 is a tens place. Okay, so its face value will be 8 into 10 is equal to 80. Okay, next this is 100, this is 1000, this is 10,000, then this is lakhs, 10 lakhs. Next it is at 10 lakhs place. Okay, so what is its place value? 8 into 10 lakhs. Okay, so 80 lakhs. This is the place value. Okay, we need to find the difference. How will we find the difference? This is 80 lakhs minus 80. Okay, so this will be the difference. This was the question based on the place value of a numbers. Okay, you read place value and face value, like that you will find the place value of these numbers. Our next system of enumeration is international system of enumeration. Okay, here it is little different to the Indian system of enumeration. This system is mostly used in the foreign countries, European countries. Okay, look, in the Indian system of enumeration, our periods are 3 digit ones, then 2 digits at 1000, 2 at lakhs, 2 at crore, 2 arab, 10 kharab, like this it will go on. Okay, it was 1, 10, 100, then 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, arab, 10 arab, kharab, 10 kharab, like this it will go. This is our Indian system of enumeration. We will compare here only the international system of enumeration. In this international system of enumerations, like Indian system, last three places are same. Okay, then thousands is 10. Here we are having 1000, then 10,000, then in place of lakhs they are using 100,000. Okay, so thousands period is also 3. Okay, look, here it was 2, here it becomes 3. Okay, like this. After thousands there is no lakhs, crores, arab, there are millions. They use millions. Okay, so in place of 10 lakhs it is million, then 10 million, then 100 million. Okay, same 3 digits. Okay, then they use billions. Okay, after millions, billions. Okay, in place of 1 arab it is 1 billion, then 10 billion, 100 billion, like this it goes on. Okay, so in Indian system we are using lakhs, crores, arabs, etc., but in international system we are using millions, billions, trillions, etc. Okay, so this is the format of international system of enumeration. Let us see one number. Okay, 3 2 7 8 9 4 7. Okay, for example, this is a number that is represented in the international system of enumeration. Ones, same ones place, then tens place, then hundreds place. There's 3 number, so last 3 digit. Okay, then thousands place, 8 at thousands place, then 7 10,000s place, then 2 not at lakhs, here it is 100,000 place. Okay, so 3 combo. Okay, this was also 3 combo, and then next number. Okay, so this will be read as 3,278,000 thousands period 278,000 once 947. 3,278,947. Okay,
Like this we read this number. Okay, let us see one big number also. 75843 125. Okay, look, 5 at ones place, then 2 at tens place, 1 at hundreds place. Okay, 3 gone. Okay, next 1000, 10,000, 100,000. Okay, 3,000, 4 at 10,000, 8 at 100,000. Okay, 843,000. Okay, 5 at million, 7 at 10 million. So it will be 75,843,125. Like this we write this number. Okay, this is the way of writing a number in the International System of Numeration. This number will be written as 75 million 843,000. Okay, 843,125. Like this we write the numbers in the International System of Numeration. And same way we are writing these numbers in the expanded form also. Okay, I'll show it. Also see one more thing. In the International System of Numeration, based on the periods we put comma. First last 3 digits we put comma. Then in Indian system we put comma after 2, but here because period is of 3 digits, so we'll put comma after 3 digits. Okay, like this we will write 3 digits, then 3 digits and 3 digits. Like this we will put commas in the International System of Numeration. Okay, let us see some more things about the number. Okay, first 1 digit numbers. Okay, 1 digit numbers are from 0 to 9. Okay, these are total 10 numbers. Okay, these are 1 digit numbers. Okay, next smallest 1 digit number is 0. Smallest 1 digit number is 0, and largest 1 digit number is 9. Okay, because after this it becomes 10. Okay, so how we find the total number of digits? How we find the total numbers? Therefore, total number of 1 digit numbers. How do we find? Okay, this is 9 minus 0. Okay, 9 minus 0 will add 1 to it. Okay. Total 10. Read this pattern. Okay, next smallest 2 digit number is 10. 10 is the smallest 2 digit number. Okay, and largest 2 digit number is 99, because after this it becomes 100. 100 is a 3 digit number. 1 2 3. Okay, then number of digits you will find number of digits, number of 2 digit numbers. Okay, how it will be? 99 minus 10 plus 1 is equal to 89 plus 1 90. There are total 90 numbers of 2 digits. 90 numbers of 2 digits. There are total 10 numbers of 1 digit. 90 number of 2 digits. Okay, let us see more. Smallest 3 digit number is 100. 3 digit smallest number is this. Okay, largest is 999. Therefore, total number of 3 digit numbers is equal to 999 minus 100 plus 1.
Okay, 999 minus 100, 899 plus 100, 900. Okay, total 900 numbers are there. Those are of 3 digits. In the same pattern we will follow. No? We will find the number of digits if it is asked. Okay, largest if it is in 5 digits, 6 digit, and so on. Okay, we can find it out. Okay, next topic is comparison of numbers. Okay, I will compare the two numbers. First, based on the number of digits, कितने digit है उसमें. Okay, based on the number of digits, if the different number of digits, then easy to find. For example, a number, for example, 2336, 2436. Okay, this is the number. This is having 4 digits. If I am having one more number, 25695. Okay, these are 5 digits, so naturally this is greater. Okay, more number of digits, so number is larger. Okay, we can compare it very easily. Okay, one more number, let us see. 1 2 5 6 9 2 3. Okay, 3 plus 4, 7 number of digits. 2 5 6 9 3 4 9 5. Okay, look, this is 8 number of digits, so this number will be greater. Okay, so based on the number of digits we can compare the numbers very easily. Second, if the number of digits are equal, okay, if the number of digits are equal है, तो how do we find? For example, let us see 2436 and 2457. Okay, look, 4 digits, 4 digits, so we need to compare. What we will do, we will start from the leftmost digit. Okay, first we will compare. Okay, leftmost is 2, here leftmost is 2, equal, so no comparison. We will move forward from left to right. Okay, like this we will compare. Next digit is 4, here also 4, so we cannot compare. Whichever number is greater while comparing, that is the greater number. Okay, 4 is equal, so we cannot compare. So next we'll move forward to the next step. Here it is 3, here it is 5. 5 is greater than 3, so this number is greater than 3. Simple. One more example, 2 5 6 9 2 3. Okay, 2 5 7 2 3 5. Look, this is 6 digit number, this is 6 digit number. Okay, we will compare. First we will compare the two, leftmost digit. Here a 2, here also, so we cannot compare, both are equal. Next, here 5, here also 5, we cannot compare. We'll move on to the next digit. Okay, here 6 is there, here 7 is there. 7 is greater than 6. Okay, so this number is greater than this number. Very simple. Like this we will compare the numbers. Okay, let us see one example. Look, 2 numbers are given. We'll compare this number. Okay, look, 3 plus 2 5 plus 2 7 digits. Okay, 3 plus 2 5 plus 2, both are having 7 digits, so we need, both are equal, so we need to compare. Okay, look, here first leftmost digit is 7, here leftmost digit is 7, both are equal, so we cannot compare at this stage. Okay, we'll move to the next number. Here it is 5, here it is 4, different numbers, we can easily compare. 5 is greater than 4. Okay, so this number is greater. Okay, 7538 254 is greater than 7459 789. Like this we can compare the number very easily. And if we want, we can compare the numbers and we can arrange the numbers in ascending order or descending order, whatever is required. ascending order या descending order, किसी भी order में हम number को compare करके फिर arrange कर सकते हैं.